हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस मॉडल इन एसएडी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग एंड एवोल्यूशनरी मॉडल कि कब काम आता है जब रिक्वायरमेंट्स अपफ्रंट क्लियर नहीं होती हैं। जैसे कि वाटरफॉल में हम देखते हैं कि वहाँ पे तभी अडेप्ट किया जाता है जब रिक्वायरमेंट्स प्रीडिफाइंड हो एंड प्रॉपर एस्टिमेटेड हो। तो बट इस केस में जब हमें रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो विद द डेवलपमेंट एज वी गो विद द फ्लो, रिक्वायरमेंट्स अगर आनी हो और उसको हमें अडेप्ट करते हुए डेवलपमेंट करना हो, तो उस केसेस में हम लोग प्रोटोटाइप और एवोल्यूशनरी मॉडल यूज करते हैं। सो अब मूविंग अहेड, recap. So when requirements aren't clear upfront, तो जो अभी तक के मॉडल्स देखते हैं उसमें क्या गैप मेजर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वाटरफॉल और वी मॉडल है, इन दोनों मॉडल्स में रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती हैं जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले। बट कस्टमर्स को ऑफन नहीं पता होता कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यू न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू न्यू चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ हिकअप्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके हिसाब से कुछ पहले की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। सो बिकॉज कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आर नॉट फ्रीज्ड upfront, so to answer these questions, the answer came up to be like build something and then learn and then develop. So सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उससे सीखा जाता है और उसको फिर फर्दर बनाया जाता है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग दो टाइप के मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। वन इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड देन देयर इज अ एवोल्यूशनरी मॉडल। सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है कि इट बिल्ड्स अ क्विक थ्रोएबल मॉडल टू डिस्कवर द रिक्वायरमेंट्स। एक क्विक प्रोटोटाइप बनाया जाता है सो दैट कस्टमर के फीडबैक ले सकें एंड उसके बाद वो मॉडल साइड में रख के उसको अब फ्रेश डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें टाइम कम लगता है एंड वो थोड़ा एक्यूरेट भी बनता है कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड एवोल्यूशनरी model is also similar, but the only difference is it builds and delivers the real product in the incremental way. It keep on evolving. It's not a prototype, it's a running source system which keeps on evolving after every iteration. So let's cover the first model, which is the prototyping model. So by definition, a prototype is a quick toy implementation of the system. It is built to understand uh, requirement, then show to the user and refine until approved. तो ये उसकी कुछ डेफिनेशन है एंड इसमें अगर आप डिटेल में डिस्क्राइब करें हम इसको, तो इट इज ऑफन यूज्ड शॉर्टकट डमी फंक्शंस टेबल लुकअप, लाइक इसमें रियल डेटा नहीं होता और कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स इन प्लेस नहीं होते। इट्स ये रियल सिस्टम जैसा नहीं होता बट उसके जैसा काफी हद तक होता है, जिसमें डमी फंक्शंस बनाए जाते हैं ताकि उसको एक सैंपल वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया जा सके। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो अनक्लियर रिक्वायरमेंट हैं, कुछ फिजिबिलिटीज हैं, वो चेक करी जा सके। जैसे यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, वो एक आइडिया होता है बट उस आइडिया को रियल में जब देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस प्रोटोटाइप मॉडल्स में उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। फिर द फाइनल अप्रूव्ड प्रोटोटाइप एक्ट एज अ एनिमेटेड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो बट ये प्रोटोटाइप होता है वो काफी काम आता है डेवलपमेंट टीम के लिए, जिसमें कि इससे इंस्पिरेशन लेके वो फर्दर डेवलपमेंट कर सके। अब जो प्रोटोटाइप का कोड होता है जनरली वो थ्रो अवे कर दिया जाता है, बट द एक्सपीरियंस गाइड, जो एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेस जो बना होता है, दैट गाइड्स द टीम टू बिल्ड द रियल प्रोडक्ट। So this is the diagram in prototyping. It's the redefining the loop, where the very first thing is like uh, quick design. They quickly make a product and then they build a prototype out of that design. Then it goes to the customer for evaluation, and then certain comments comes in, and then the refined prototype is made. And this loop keeps on repeating until the final approvals are given. Once the final approval are given by the client, it ये लूप ब्रेक होता है, फिर इसके बाहर आके फिर स्क्रैच से बिल्ड और डिलीवर किया जाता है एक सिस्टम को। कुछ प्रोज एंड कॉन्स प्रोटोटाइपिंग के। प्रोज ये हैं कि इट्स ऑलवेज यूज्ड व्हेन क्लैरिफाइज वेग रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करता है ये। फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है। और इसमें क्योंकि यूजर इन्वॉल्व होता है तो पहले काफी अर्ली स्टेजेस में यूजर इनपुट लिए जा सकते हैं।
Then great for GUI heavy system like graphic user interface अगर काफी ज़्यादा हो, यूजर की स्क्रीन्स बहुत सारी हो और इंटरडिपेंडेंसीज हो स्क्रीन्स पे, तो हैवी अगर GUI का वर्क हो तो उसके लिए बहुत एडवांटेजेस है. Then there are some limitations to it, like the throwaway effort cost time, like prototype, as you know, it is thrown away after the final approval, so uh, that's a cost to the company. Then the user may think it's a final product. So sometimes the customer think that this prototype is a real final product, but that's not the case. The development is yet to begin. Then it encourages a quick fix, poor design. So like it intimidates the team that the same prototype can be reused instead of throwing it away. It is reused, so it can lead to poor designing because there are dummy functions in place for creating this prototype. And then it can raise a false expectations between different stakeholders that the product is finally ready, and then we are good with the deployment. So now a quick question. In this throwaway prototype model, what usually happens to the prototype after requirements are finished? So your options are: option A, it becomes the final product; option B, it is usually thrown away; option C, it replaces the SRS forever; option D, it is sold to the customer. So you can pause this video and just think on it. So the answer is B, it is usually thrown away. Then the second model that we will explore is the evolutionary incremental model. In this model, the build the system in incremental way, starts with the core functionality and then add refined features in each successive version until it's completed. Like the whole requirement is broken down into functionalities, and the core functionalities are covered first, and successively one by one features are implemented. Each increment is a working program delivery to the customer. Then the customer feedback on each release shapes the next increment. So it's a quick feedback loop also there in the model. Then in the first few increments, the core functionalities are developed. Later on in the successive increments, the new additions or fixes are done for the earlier functionalities. And afterwards, in the final, the complete product is developed. Unlike in the prototype, increments are kept, है ना, they evolve into the real system. So प्रोटोटाइप में जैसे कि प्रॉपर जो कोड होता है उसको थ्रो अवे कर दिया जाता है, वैसे ही एवोल्यूशनरी या इंक्रीमेंटल मॉडल में जो कोड डेवलप हो रहा होता है ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट्स, उसको थ्रो अवे नहीं किया जाता, उसी को रियल सिस्टम में बनाया जाता है. There is a pictorial diagram to evolutionary model. So as I earlier told you, the increments, uh, every increment have some features or functions develop जिसमें किए जाते हैं. तो वैसे जो फर्स्ट रिलीज होती है उसमें कोर फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं. देन लेटर ऑन रिलीज टू रिलीज 3 में फर्दर जो एडहॉक और करस्पॉन्डिंग सर्विसेज होती है उनको क्रिएट किया जाता है. एंड देन फाइनली आफ्टर ड्यू डिलिजेंस ऑल द इंक्रीमेंट्स आर फिनिश्ड with the proper feedbacks coming from the system, फाइनली जो रिलीज वर्जन होता है उसको रिलीज किया जाता है. Then there are some pros and cons to evolutionary model as well. So few advantages of evolutionary model is users are partially part of the system because after every iteration with the users reviewing the product, they can give their inputs and the requirements get uh, to the point, and the core is tested thoroughly. Like with every iterations, we are introducing new and new features. तो along with the feature जो core functionality जो कि सबसे पहले फेज में बनी होती है वो कई बार टेस्ट हो चुकी होती है. And the best part of this evolutionary model is it handles the change requirement because it is a iterative loop. So after the customer's feedback in the next release, along with the fixes, new requirements can be adjusted. Now some limitations to it. The process is intangible. You never know when it is going to end because there is never ending. The requirement change will keep on happening. There is no uh, end phase of it, and sometimes it becomes unpredictable to hard to schedule and manage this much changes. Now it needs a good
module structure architecture so that it can be divided into different evolutions. Then can degrade structure over time. Now a quick question: in the evolutionary or incremental model, what does the first increment usually delivers? So as you know, it's option B, the core functionalities. The first increment delivers the core functionality as a working release. Later increments add and refine until the product is up. Sorry. So some exam traps. Prototype is equal to evolutionary. Throwaway, it's not true because prototypes are thrown, discarded, and evolutionary are kept, and it keeps on evolving. Prototype is the final product. No, it's a toy learning for the team. Real system is built afterwards. Then the evolutionary needs no plan. No, it is intangible, so it becomes important to plan it upfront. Lastly, ignoring core first. Like evolutionary delivers core functionality first, then it grows over the core module. Now, a quick recap what we did in the lecture. So we studied about prototype, why, how the prototype is used, evolutionary model, when to use evolutionary. Both of these models are used when the requirements are unclear and it needs to be evolved during the process. So these are that kind of models. And the key difference between both of them is prototype is discarded. However, the incremental or evolutionary one, the product is kept. Then before closing the video, a quick practical question. Let's say a client can't clearly state requirement for a new app. Which model would you choose and why? How would the evolutionary model deliver it in the increments? So you can answer it in the comment section. I will pin the best one. And in the next lecture, we will go through the spinal model. So thank you so much. Please like and subscribe.